Hello everyone. So welcome to my YouTube channel Learn with Saurabh. On this channel guys, we are going to learn complete Python tutorial from very basics to the advanced. Until now guys, we have discussed about the programming language because Python is a programming language, and today we are going to learn about Python, the basics of Python, why we should use Python, what are the different use cases of Python. So tons of things guys we are going to learn in the coming video. So जो लोग इस चैनल पे नए हैं, kindly go like this video, watch this video, comment on this, and also don't forget to subscribe this channel and also press the bell icon. So let's start guys. So today we are going to learn about Python. So what are the agenda for today's session that we are going to learn is about Python. हम लोग Python के बारे में समझेंगे, Python होता क्या है, Python को किसने बनाया, Python कब लॉन्च हुआ, right? So different thing we are going to learn. Then we will see some of the introduction of Python. Then we will also see कि Python ही क्यों, why we should not go for another language or why we should use Python. Python ही हम लोग क्यों यूज करें. फिर हम लोग देखेंगे कि पाइथन का हिस्ट्री क्या है. आई टोल्ड यू वी विल सी कि पाइथन को किसने बनाया, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाइथन, हु वाज द क्रिएटर ऑफ पाइथन, राइट. एंड देन वी विल सी सम ऑफ द यूज केस ऑफ पाइथन. सो स्टार्टिंग विद पाइथन. सो पाइथन है क्या? So as we all know that Python is a programming language, as we have discussed in our very first video कि programming language क्या होता है. So Python is also a programming language, and this programming language was created by Guido van Rossum. इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को गिडो वान रॉसम ने बनाया था, एंड दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज रिलीज्ड इन 1991. So now you might have this question that why this programming language is named with Python. इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम Python क्यों पड़ा? Why not other? So what happened guys, when Guido van Rossum was created this language, so at that time he was watching a very famous show of that time in the USA. It was name was Monty Python's Flying Circus. So on the name of this circus show, Guido van Rossum has named this programming language as Python. And what is Python? So basically Python is a high level language. We know that we have different kind of language like low level, assembly language, right? So it's a high level language. और ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. इट मींस कि पाइथन इंटरप्रेटर को सपोर्ट करता है. इंटरप्रेटर क्या होता है, वी विल सी इन द coming lecture. So basically Python is an interpreted language, so we call it as an interpreted, and it's a interactive. So what is the meaning of interactive is that if you install Python, so by simply sitting on this command prompt you can do the code of Python. आपको बस Python यहाँ पे launch करना है, and whatever the code you want to do on Python, like you want to add two numbers, so you can write here a is equal to 10, b is equal to 20, right? And then print a plus, or you can do this a plus b and you will get the output. See, you can simply also do like 20 into 30 and it will give you the output. So you can just simply sit on this command prompt and you can do the code of Python. So that's why we call Python as a very interactive language, and this is an object oriented scripting language. So what is object oriented? So we will come to see object oriented, a complete object oriented lecture in the coming videos, in the coming lecture. So basically for now you can understand that Python support the concept of object in classes, right? So that's why we call Python also as a object oriented scripting language. Now it is highly readable. So what is meaning of highly readable? You can see the code of Python is so simple that a non-technical person can understand what this line of code is doing, right? जैसे यहाँ पे a is equal to 10 है, b is equal to 20, तो हम लोग आराम से इसे समझ सकते हैं कि a में 10 स्टोर है, b में 20 स्टोर है, और हमने 10 plus 20 को ऐड करके यहाँ पर रिजल्ट आया. So the code of Python is very readable. Why this is readable? Because it has a common syntax similar to English language. So we will see. So that's why we call Python as a very, very highly readable language. Now the question is Python a compiler or interpreted or both? So before answering this question, so let me first tell you what is interpreter and what is compiler, right? हमें पहले समझना होगा कि compiler होता क्या है, interpreter होता क्या है, and then we will answer this question. So as I discussed in the programming language lecture guys, that what happens, suppose this is some person like Rishi, and he is trying to make some of the product like a self-driving car. So to make this product, he needs some technology, suppose AI, right? He
he need one technology named AI, artificial intelligence, and to implement this technology we need an operating system. And what happened with operating system, that जो operating system है वो सिर्फ एक language को समझता है, and that is machine language. And what is machine language? In the form of 0 1. So ऋषि cannot communicate with OS. अब ऋषि को क्या करना होगा, इस AI को implement करने के लिए operating system से communicate करना होगा. So to communicate with operating system, ऋषि need to connect with OS. तो अब ऋषि को आता है normal English and operating system 0 1. So it is nearly impossible for Rishi to communicate with OS. So इसके लिए हम लोग ने क्या किया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करेगा, ऋषि जो भी इंस्ट्रक्शन देगा, whatever the instruction Rishi will give, this programming language will convert this instruction into the machine language and will convey it to operating system. So what basically programming language is doing? Programming language is converting the text from the Rishi into the machine language. So basically we can say programming language is what? Programming language एक translator है, और ये translate कैसे कर रहा है? तो actually में हर एक programming language के पास या तो compiler होता है या तो interpreter होता है. So you can understand as compiler and interpreter that they both are translator, और इनके वजह से ही जो हमारा कोड है, जो हम लोग नॉर्मल इंग्लिश कीवर्ड सिंटैक्स का यूज करके जो कोड करते हैं, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर ही उस कोड को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में. सो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर व्हाट? सो दे बोथ आर बेसिकली अ ट्रांसलेटर. वी कैन कॉल इट एज अ ट्रांसलेटर. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर दोनों ही कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही ट्रांसलेटर है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और कैसे हम लोग पता करेंगे कि कोई एक पार्टिकुलर प्रोग्राम जैसे जावा है वो कौन सा ट्रांसलेटर यूज करता है, या पाइथन है वो कौन सा ट्रांसलेटर यूज करता है. अगर दोनों ही अगर ट्रांसलेटर तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है. सो नाउ देयर इज वन डिफरेंस गाइस. ओके, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है? ओके, डिफरेंस तो बहुत है, बट वन मेजर डिफरेंस क्या है, जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करेगा, सपोज तुमने एक कोड लिखा लाइक a is equal to 10, b is equal to 20 and print a plus b. So this is basically a Python code. तो जिनको ये कोड अभी समझ में नहीं आ रहा, no need to worry, we will discuss everything in this tutorial. So for example, suppose this is a code. अब कंपाइलर क्या करेगा, अब ये कोड क्या है, ये नॉर्मल कीवर्ड सिंटैक्स में है. ओके, कंपाइलर क्या करेगा, if suppose the programming language is using compiler as a translator, तो कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे कोड को एक बार में ही क्या करेगा, वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा. मतलब जैसे तुमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, प्रोग्राम को रन किया, कंपाइलर एक बार में ही ये सारे कोड को मशीन लैंग्वेज में जनरेट कर देगा. राइट, मतलब कंपाइलर सिंगल गो में ही ट्रांसलेट कर देगा. और इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा. पहले वो इसको ट्रांसलेट करेगा, फिर वो इसको ट्रांसलेट करेगा, एंड देन आफ्टर इसको ट्रांसलेट करेगा. तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है translate. So we can understand that compiler translate in a single go and interpreter क्या करता है, interpreter line by line करता है translate. So this is the difference between the compiler and interpreter. So compiler and interpreter क्या है, ये एक translator है, compiler एक बार में ही translate कर देगा और interpreter line by line करेगा. Now coming back to this question कि क्या Python compiler है या interpreter है या दोनों है. So the answer for this question is guys, Python support both. वो कंपाइलर को भी सपोर्ट करता है और इंटरप्रेटर को भी सपोर्ट करता है. अब कैसे, सो लेट मी एक्सप्लेन यू. सो देखो होगा क्या, सपोज तुमने एक कोड लिखा. ओके, सो सपोज सोर्स कोड क्या है, तो तुमने एक प्रोग्राम बनाया और उसका एक कुछ नाम दिया लाइक hello world.py. सो वी विल नेम दिस फाइल एज अ सोर्स कोड. हम लोग इसको सोर्स कोड कहेंगे क्योंकि इसी फाइल में तुम्हारा सारा कोड है. तो जैसे हम लोग सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो वो सबसे पहले हमारे कंपाइलर के पास जाएगा. इट विल गो टू कंपाइलर फर्स्ट, और कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे सोर्स कोड को एक बार में ही कंपाइल करके बाइट कोड जनरेट कर देगा. एंड देन दिस बाइट कोड इज लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटेड बाय इंटरप्रेटर इनटू द मशीन लैंग्वेज. सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर गाइस, एंड दिस इज द कंप्लीट थिंग दैट इज हैपनिंग बिहाइंड द सिस्टम. So source code क्या होता है, compiler through compile होता है, byte code generate करता है, and then this byte code is translated line by line by interpreter into the machine language. So Python support both. Right. Now the question is why Python? Right. So Python हम लोग इसलिए पढ़ेंगे, इसलिए समझेंगे. The
advantage of Python is that we can use Python on different platforms. Like we can use Python on Windows system, we can use Python on Mac OS system, we can use Python on Raspbian OS. So different OS support Python. And lots of Linux operating system, if you will use Red Hat or any other, you will see that Python is already installed on that system. So Python works on different platforms. And the second advantage is that it has a very simple syntax similar to the English language. अगर किसी ने C पढ़ा है या C++ पढ़ा है या Java पढ़ा है, तो you can understand the difference between that programming language, the keyword and syntax that we use in Java or C++ or C, and the keyword and syntax that we are going to use in the Python. So Python have a very simple syntax similar to the English language, so it's very easy for everyone to understand and code. The third advantage or the third thing that we should use Python is that it runs on an interpreter system. So just now I have explained कि interpreter system क्या होता है. So Python works on interpreter system. And the third advantage, or you can say fourth, is that we can treat Python programming language in a procedural way. Procedural में it means कि हम लोग एक procedure के through अपने code को लिख सकते हैं. We can also treat Python in a object oriented way. It means कि हम लोग object और class बना के create करके भी हम लोग we can use that Python programming language. And we can also use Python in a functional way. हम लोग function create करके भी Python से program लिख सकते हैं. So what is object oriented and what is function? So in the coming lecture we are going to understand कि functions क्या होते हैं या object oriented programming क्या होते हैं. Just for now you can understand कि functional way मतलब हुआ कि हम लोग function बनाते हैं. And object oriented, it means कि we use the concept of class and object and different concept of object oriented programming like polymorphism, abstraction, encapsulation, inheritance. Okay. Now uses of Python. Python को हम लोग कहाँ use कर सकते हैं. So we can use Python in the field of web development. Like we have some famous framework like Django and Flask. So we use Python in the field of creating web development. We can use Python on a server to create web application, right? हम लोग Django Flask का use करके हम लोग web application भी Python में बना सकते हैं. जैसे अगर मैं example बताऊं तो Netflix is made with Python. We have used developer has used Django in the Netflix, and you can have a detail. You can do one research work also, guys. Like you can do one research that how Python is used in Netflix. You can just search on Google and you can just go through any link, or you can just have a complete knowledge कि Python कैसे Netflix में use हुआ है Netflix को बनाने के लिए. Netflix का जो website है, right, जो web application है, उसमें हमने developer ने Python को कैसे use किया है, and what are the different technique we have used in the Python to create that web application. The second thing, we use Python in the field of game development. So Python के पास एक famous module है. We have one module called Pygame. Pygame के through हम लोग Python से game development भी कर सकते हैं. We can also use Python in the field of machine learning and artificial intelligence. So there are some libraries like NumPy, Pandas, Scikit-learn, and different libraries available in the Python which support all this machine learning and AI work, right? We can also use Python in the field of data science and data visualization. So we can use Python for big data problem and some complex mathematics, like we want to predict some data. So we have different modules and libraries in Python which support both in machine learning and in the data science. We also use Python in the field of automation testing, like we have you can say PyTest. We use PyTest. Most of the developer use PyTest for their automation testing, and different libraries are also available for which we will have a separate tutorial on PyTest, how we can do automation testing with the PyTest, right? So these are the use case of Python, guys. So I hope now you all are aware कि Python क्या है, Python को किसने बनाया, हम लोग को Python क्यों पढ़ना चाहिए, और Python को हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं. Not just only this, guys, we can use Python almost everywhere. And one of the big reason of this is why, because in Python we have a different modules for different things. Like you can see game development के लिए हम लोग Pygame यूज कर सकते हैं, machine learning में हम लोग NumPy, Pandas, data science में हम लोग Matplotlib, Seaborn. So different modules are there to perform different tasks. So that's why Python has a very broad field. Okay. So आज के वीडियो में बस इतना ही. हम लोग ने देखा कि हम लोग Python कहाँ यूज कर सकते हैं और Python हमें क्यों यूज करना चाहिए. So in the coming video, guys, we are going to see how we can use Python in our system. We will also see
what is ideally, because we need one ideally to do code on Python. So this all thing we are going to discuss in the coming video. So that's all in this, guys. So if you like the video, so do comment, and whatever the query you have, you can just comment in the comment section. I will go through all your comments. And if you like this video, so share with your friends so that they can also learn this complete Python from very basics to advanced. So that's all. See you in the next video.